Hello students, in our previous lesson we had learned about the noun topics, and that is a singular noun and plural noun, as well as we had learned about gender, feminine gender and masculine gender. In this way, possessive cases also we have learned in our previous lesson. So today we are going to learn the third grammatical lesson, that is the use of pronouns. Okay, so we will learn what is meant by pronouns, and I hope you know that what is the pronouns is a second parts of speech. Okay, nouns and second pronouns. So today we are going to learn the uses of pronouns. So firstly, look at these pictures. Here you have given some of the words that is the involved into pronouns. So first you can see here personal pronouns. There are so many types of pronouns, but in our lesson we are going to learn the first part, it means first type, that is personal pronouns. And in these personal pronouns there are also three divided into personal pronouns, that is called, first is pronouns of the first person, that is, for example, I, my, mine, me, we, our, ours, us, myself and ourselves. These are the first person personal pronouns. Okay, so let us see the next type, pronouns of the second person, you, your, yours, yourself and yourselves. These are the second person of personal pronouns. Let us see the third examples and third type of personal pronouns, pronouns of the third person, he, his, him, himself, she, her, hers, herself, it, its, itself, they, their, theirs, them, themselves. These are the examples of third person pronouns. My dear students, you are thinking that which are these pronouns, that how do we use these pronouns in our sentences? So at firstly I want to show you one chart that you can understand what is meant by really pronouns. So look at this chart. Here you can understand clearly and carefully. Look at this chart so you can understand which are the personal pronouns and how do we identify first person, second person or third person. And in these also we can different or we can divide it into singular pronouns and plural pronouns. So let us see the chart. First, here you have given person. It means now we will learn in our textbook, that is first person, second person and third person. In these three persons types, it means personal pronouns, here you have given each and everything is singular pronoun and plural pronoun. It also second person singular pronoun and plural pronoun, as well as third person singular and plural. So let us see what is meant by first person, what is meant by second person and what is meant by third person. So look at here, first person means those person who can speak or who speak in this sentence. इट मीन्स इस सेंटेंस में या फिर कोई भी सेंटेंस आपके सामने जब आता है तो उस सेंटेंस में जो भी व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा है तो वो व्यक्ति होता है हमारा स्पीकर. इट मीन्स फर्स्ट पर्सन. ओके, सो जो सेंटेंस में खुद बोल रहा है, जो खुद के बारे में या फिर कोई भी उसका इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, तो वो स्पीकर जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन. सो लेट अस सी which are the examples or which are the pronouns that we use for the speaker. In singular you can see here I, me, my, mine and myself. These are the singular first person's pronoun. Okay, so let us see the plural. Which are the plural pronouns? We, us, our, ours and ourselves. These are the plural pronouns of first person. So in our sentence we every time we see the I or we, these are the words. Okay, but these words also divided into some of the things. That means I and we, these words is divided into subjective. It is called subjective of that pronoun. Let us see the next, me and us or my and our. These are the objective of that pronouns. And remaining my and mine and our, ours. These two pronouns is called possessives. And last, myself or ourselves. This shows the reflexive pronouns. It means this also divided into these pronouns classifications. Okay, so firstly you should remember that what is meant by first person, second person and third person. These all are the pronouns.
Okay, these all are the pronouns which you can see in this chart. But from this, it means left side, you can learn carefully that you should remember what is mean by first person. First person means जो भी व्यक्ति बोलता है या फिर जिसके बारे में, मतलब जो व्यक्ति उस सेंटेंस में बोल रहा है वो हो गया हमारा स्पीकर. ओके, सो लेट अस सी द सेकंड पर्सन, दैट इज कॉल्ड लिसनर. लिसनर मीन्स अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो जो सुनने वाला होता है, एक आदमी है जो बोल रहा है तो वो बोलने वाला होता है हमारा स्पीकर, और एक दूसरा है जो कि बात सुन रहा है. पहले वाला जो बात कर रहा है उसकी बातें वो जो सुन रहा है उसी को हम बोलेंगे लिसनर. इट मीन्स सेकेंड पर्सन ऑफ दैट सेंटेंस. दिस इज कॉल्ड लिसनर. ओके, अभी ये थर्ड पर्सन कौन सा होता है? थर्ड पर्सन इज दोज पर्सन, द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट. इट मीन्स दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं पर वो बातें जो कर रहे हैं वो किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. इट मीन्स वो दोनों जो भी बात कर रहे हैं वो खुद के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो वो किसी तीसरे आदमी को पॉइंट आउट करके उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं. तो वो जो तीसरा आदमी है उसी को हम बोलते हैं थर्ड पर्सन. इट मीन्स द पर्सन विच यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके, इन दिस वे you should remember that first person means speaker of that sentence, second person means listener of that sentence, and third person means the person you are talking about. Okay, in this way these three persons, it means these personal pronouns of these three types you can understand now. So let us see the examples of that specially pronouns. It means singular and plural. Each and every part there we can see the singular and plural in this way. So let us see the second part. Here you, your, yours and yourself, these are the singular pronoun, and plural which are you, your, yours and yourselves, these are the plurals. Why? We can see the same of those word, but there is a little difference in meaning. So how? You means two. ओके, यू मीन्स तू. सिंगुलर में जब हम यू का यूज़ करते हैं तो उसको तू का उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं. ओके, या फिर उसका मीनिंग कैसे आता है? तू का आता है. और प्लूरल्स में जब हम यू का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे आप. ओके, इस तरह से उसको रिस्पेक्टफुली बोला जाता है तो उसका होता है यू मीन्स आप. इन दिस वे सिंगुलर थर्ड पर्सन you can see here singular he, she and it, and it's all the remaining pronouns. It means he, him, his, himself, she, her, hers, herself, it, its, itself. In this way also plural form of that pronoun we can see here they, them, their, theirs and themselves. These all are the pronouns which we can learn in our textbook. Hopes you understand this chart, and you should also create this chart like this and learn every day. Each and every day you can learn at your home. Okay, so now look at the textbook. Yeah, here on the page number 95 we can see here personal pronouns, that is first person, second person and third person. So let us see the next point, case of personal pronouns. पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं उनके केस किस तरह से वो प्रोनाउंस को सेंटेंस में यूज़ किया जाता है उसको हम बोलेंगे केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. सो द फॉलोइंग प्रोनाउंस आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. विच आर द सब्जेक्ट प्रोनाउंस? I, we, you, he, she, it and they. These pronouns is called a subject of that sentence. It means subjective pronouns. Okay, so let us see the next. The following pronouns are used as an object, which are that me, us, you, him, her, it and them. These pronouns is called object of that pronouns. Okay, objective pronouns. In this way also third sentence you can see here the following pronouns are used as a possessive adjectives. Okay, so which are they? My, our, yours, his, her, its and their. These pronouns is called possessive adjectives of that sentence. Okay, it means when we see these all pronouns in the sentence here, that time we can understand that which are the subjective pronoun, which are the objective pronouns and which are the possessive adjectives of that pronouns. Okay, you should remember this carefully. These pronouns work as adjective. They always take a noun after them. How? Let us see the example. Its leg, my ball, his pen, your doll, her pencil, their teeth. In this way, these all pronouns, it means
its, my, his, your, her and their. These pronouns always take a noun after them. इट मीन्स इसके बाद कभी भी हम जब ये सेंटेंस में देखते हैं तो इस प्रोनाउंस के बाद हम नाउन को पाते हैं. इट मीन्स उसके बाद हम नाउन लिखते हैं. ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड. सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज. So let us see here now. The following words are possessive pronouns. Mine, our, yours, his, hers, its and theirs. These are the possessive pronouns. These words are pronouns, not adjectives, because they never take a noun after them. ये जो pronouns है उसके बाद कभी भी nouns नहीं आते हैं. तो ये जो possessive pronouns होते हैं उसके बाद क्या आएंगे? मतलब वो जो possessive pronouns होते हैं वो लास्ट में जाते हैं. इट मीन्स उसके बाद कोई भी नाउन या फिर कोई भी वर्ड्स नहीं आता है. ओके, जिस तरह से हमने लास्ट में देखा कि ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं तो उसके बाद हम नाउन्स को देखते हैं, पर यहाँ पे जो भी पॉजेसिव प्रोनाउंस आते हैं तो उसके बाद कभी भी नाउन्स नहीं आते हैं. लेट अस सी हाउ दैट. एग्जांपल यू कैन सी हियर, दिस बुक इज माइन. Okay, so you can see here mine, and this is a possessive pronoun, and after this possessive pronoun we cannot see any word. Okay, so you should understand here, that pen is hers, my dog and yours are both lovely, I got my share and she hers. In this way possessive pronouns always comes at the end of that sentence. Okay, so let us see the next point, reflexive pronouns. Which are the reflexive pronouns? The following pronouns are called reflexive pronouns. Myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself and themselves. Here you can see self, self. These are the singular pronoun. Okay, and selves, selves. These are the plural pronouns. So you should remember this, that ourselves, yourselves and themselves. These are the plural pronoun of reflexive. Okay, and remaining those are the singular pronouns. In this way we had learned all the pronouns in our textbook which you have given. Reflexive pronouns are used as an object. They are used when the subject and the object are the same person. How? Let us see the example. यहाँ पे क्या बताया गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट में आते हैं और दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम. वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तभी यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है. कैसे? तो यहाँ पे एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि एक पिक्चर्स यहाँ पे दिया है, जो विंडो के बाहर एक बॉय है और विंडो के अंदर वो एक गर्ल है. सो शी इज़ लुकिंग एट हिम. वह गर्ल उस बॉय की तरफ देख रही है. तो ये जो पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो वो पिक्चर्स डिफरेंट है ना. ये बॉय है और ये गर्ल है. सो देयर वी कैन सी द डिफरेंट. बट ऑन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक लड़की है जो मिरर में देख रही है ना. खुद का फेस आईने में वो देख रही है और वो उससे बात कर रही है. हाउ? शी इज़ लुकिंग एट हर सेल्फ. वो खुद की तरफ देख रही है. इट मीन्स कैसे? आईने का इस्तेमाल करके. इट मीन्स दिस इज़ द सेम पर्सन. यहाँ पे दोनों पर्सन एक ही है ना. आईने में जो दिखाई दे रहा है वो भी वही गर्ल है और ये भी वही गर्ल है. इट मीन्स when we can see the same person, that time we used this type of reflexive pronouns. Let us see the more examples here also. Here we can see lady and gents and she is talking to him. Here different person we can see. So let us see the next example. She is talking to herself. One girl you can see here and she is talking to herself in this picture. It means वो उस मिरर में खुद के साथ बोल रही है. तो ये वाला जो पिक्चर्स है वो हमारा सेम पर्सन है. वही गर्ल है जो खुद के साथ बातें कर रही है ना. तो ये जो दो पिक्चर्स आप देख रहे हो वो सेम पर्सन के हैं और यहाँ पे डिफरेंट पर्सन के पिक्चर्स दिए हैं. तो हमें क्या बताया है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है वो प्रोनाउंस तभी सेंटेंस में आएंगे जब वो सेम पर्सन उस सेंटेंस में आएगा. इन दिस वे शी इज़ लुकिंग एट हर सेल्फ. दिस word is called reflexive pronoun. Hopes you understand, students, what is mean by pronouns. So look at once again this chart. Here also I have given you the subjective pronouns. It means I, we, you, he, she, it and they. These are the subjective pronouns. And here you can see objective pronouns
Me, us, you, him, her, it and them. These are the objective pronouns. And remaining here possessives. Which are the possessives? My, mine, our, ours, your, yours, yours, his, her, hers, it, its, their, theirs. In this way, these all are the possessive pronouns. Okay. And lastly, you can see here reflexive pronouns, that is myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, as well as themselves. These are the reflexive pronouns. So you should remember this chart as well as in your textbook which information you have given. Okay. So let us, we will start the exercise on the page number 97. First question, complete this table of personal pronouns. You have given the personal pronouns of the table and you should complete this table of this filling the blanks. First, subject pronouns, next object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns and reflexive pronouns. In this way you have given one chart and you should write the each and every personal pronouns. So I have given you some of the answers here. So you should take care while you have completing your textbook. सो यहाँ पे जो भी मैंने आंसर दिए हैं तो वो आंसर आपको देख के आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है. सो आई हैव गिवन हियर. सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज वर्ड्स फ्रॉम द अबव टेबल फॉर ईच ब्लैंक. दैट्स रोसी डैश इज़ माई सिस्टर. सो रोसी के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? शी, बिकॉज शी रोसी इज़ अ गर्ल and when we see the female noun, that time we used she pronoun for that female person. Okay, so we use here she pronoun. In this way you should remember which are the person or things here you have given and you should correct these pronouns of the fill in the blanks. Okay students, so let us see on the next page. On the second page you have given more examples. It means up to 18 examples you have given and you should complete these all the fill in the blanks with your correct pronouns. Question number third, you can see here, complete each sentence using suitable pronouns. First, here some of the words are given and some of the words solve for you. It means write the fill in the blanks. These are also. So here you have given I love you and if we ask this question, so you should write here, do you love me? In this way, so here you have to write I, here you, and here you, and here me. In this way you have to complete this. So you should take care about this all the fill in the blanks and you should complete this chart also. So let us see the question number 4. Complete this letter to a pen friend, add suitable pronouns. So यहाँ पे आपको एक लेटर दिया है जिसमें कुछ ऐसे प्रोनाउंस है जो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं. ओके, तो यहाँ पे जो भी डैश दिए हैं इट मीन्स जो फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसमें आपको करेक्ट जो भी प्रोनाउंस यूज़ करना है वो आपको उस लेटर को पूरा रीड करके देखना है और वो प्रोनाउंस वहाँ पे राइट डाउन करना है. होप्स यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट अस वी विल लर्न अदर प्रोनाउंस विच वी कैन सी ऑन द मोर सेंटेंसेस that is you have given on the page number 99. So let us we will learn these also. Other pronouns, we use one instead of repeating a singular noun. We also use ones instead of repeating a plural nouns and we use one and ones in place of a countable nouns. It means one or ones. This is also called pronouns. Okay, so let us see the example. I am making a sandwich. Would you like one? मैं सैंडविच बना रही हूँ, क्या आप एक खाओगे? इस तरह से. डू यू वॉन्ट बिग एप्पल्स और स्मॉल वंस? आपको कौन सा एप्पल चाहिए, बिग वाला या स्मॉल वाला? इस तरह से हम जैसे पूछते हैं ना, तो कौन सा चाहिए, स्मॉल वन या फिर बिग वन. सो लेट अस सी द थर्ड एग्जाम्पल. लुक एट दिस जैकेट्स, विच वन डू यू लाइक? आपको कौन सा पसंद है? इस तरह से जब भी हम क्वेश्चन आस्क करते हैं या फिर कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें वन या फिर वंस का यूज़ करते हैं और वो जो वन या फिर वंस है तो उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउंस ऑफ दैट सेंटेंस. सो नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, विच वंस डू यू वांट? इन दिस वे ऑल्सो लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, दे आर यूज्ड एज प्रोनाउंस. हियर यू हैव गिवन सम ऑफ द चार्ट्स and here
so many words you have given, and also these words we can use as a pronouns in the sentence. So which are these words? Let us see here. Somebody, someone, something, somewhere. It means here you have given 4 words which start with the same word but ends indifferently. It means somebody, someone, something, somewhere. These also used as a pronouns in the sentence. Let us see the next. Anybody, anyone, anything, anywhere. As well as nobody, no one, nothing, nowhere. Also everybody, everyone, everything, and everywhere. These all we see these example or these words as a pronouns in our sentences, and this all meaning is different. Okay students, you can see the some of the words of that say simply same to same, but these are not meaning same. Here we can see the different meaning of that words. Okay, so let us see the next point. We use somebody, someone, something, somewhere in affirmative sentences. ये जो somebody, someone, something, somewhere ये जो सेंटेंस वर्ड्स है वो वर्ड्स हम कब देखते हैं? जब हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं तो उस टाइम ये वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. इट मीन्स यह प्रोनाउंस उस टाइम यूज़ किए जाते हैं जब हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं. सो लेट अस सी द नेक्स्ट. वी यूज़ एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अभी ये जो प्रोनाउंस है एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग एंड एनीवेयर, दिस प्रोनाउंस इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, तो ये जो प्रोनाउंस है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. देयर इज समबडी एट द डोर. देयर इज समबडी एट द डोर. उस डोर में मतलब दरवाजे के बाहर कोई तो है. इस तरह से जो सेंटेंस में समबडी वर्ड का यूज़ किया है तो वो कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट. देयर इजंट एनीबडी एट द डोर. क्या वहाँ पे कोई नहीं है? इस तरह से जब हम क्वेश्चन आस्क करते तो वो हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस. एंड थर्ड सेंटेंस, इज देयर एनीबडी एट द डोर. क्या वहाँ पे कोई है? तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इन दिस वे समबडी वर्ड इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड एनीबडी दिस वर्ड इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इन दिस वे वी कैन यूज दिस ऑल वर्ड्स इन our sentence as a pronouns. So let us see the next point. We can use somebody, someone, something, somewhere in questions to make a request or an offer. For example, can somebody help me? Would you like something to eat? Can we go somewhere for picnic? In this way, this word we can use also in asking question. Okay, work with your partner and make sentences using all pronouns given in the box above. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपके फ्रेंड्स के साथ मिलके यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हैं, जितने भी प्रोनाउंस दिए हैं, उनको साथ लेके इट मीन्स उस वर्ड का यूज़ करके आपको ऐसे और कुछ सेंटेंस बनाने हैं और उसका एक बंच करना है. ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड एंड यू शुड मेक दिस. सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज. वाओ, हियर ऑल्सो वी कैन सी द मोर प्रोनाउंस दैट इज कॉल्ड नोट दैट. यूजिंग बाय नॉट here we can make a different pronouns. Not plus anybody, it means nobody. Not plus anyone, it means no one. Not plus anything, it means nothing. Not plus anywhere, it means nowhere. In this way, these all pronouns we can make by using not word. Okay, you should remember how do we make these pronouns by using this not word. ओके, ये जो नॉट वर्ड होते हैं उस नॉट वर्ड को हम जब किसी वर्ड के साथ मिक्स करते हैं तो उसका एक नया वर्ड बनता है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. नॉट एनीबडी, इट मीन्स नो बडी. नॉट एनी वन, नो वन. नॉट एनीथिंग, नथिंग. नॉट एनीवेयर, नो वेयर. इन दिस वे वी कैन सी हाउ डू वी मेक द डिफरेंट प्रोनाउंस टू यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन वर्ड्स. ओके, सो लेट अस सी हियर. नोबडी, नो वन, नथिंग, नोवेयर. These are more emphatic than the not forms. There is nobody here. There is not anybody here. We have nothing for dinner. We have not anything for dinner. In this way, this word also we can use as a pronouns in our sentences. So you should remember also this. It means here on the next on the page number 99, we had learned the other pronouns which we can use in our sentences as a pronouns. So you should remember this chart also and also this chart. So you should write those charts in your pages or notebook. No problem.
So let us see the exercise. Fill in the blanks with one or ones. ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है और उसमें जो प्रोनाउंस आपको ऐड करना है वो होगा वन या फिर वंस. तो इनमें से कौन सा प्रोनाउन आएगा वो आपको देखना है और वहाँ पे राइट डाउन करना है. सो नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन. यूज वन और वंस इन प्लेस ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स इन ईच सेंटेंस. सो इसमें भी आपको कहाँ पे वन यूज़ करना है और कहाँ पे वंस यूज़ करना है वो आपको देखना है और वो सेंटेंस करेक्ट करके लिखना है. सो लेट अस सी द फर्स्ट. माई हाउस इज़ द हाउस नेक्स्ट डोर. So its answer you have given here. My house is the one next door. In this way you should write these all examples in your notebook. Let us see on the next question. Question number 3. Complete the table. You have given some of the table and you should complete this like this. Okay. Here I have given you with answer. So you should take care about this and you should check this carefully and complete your textbook also. Complete these tables like this. So let us see the next question. Question number 4. Choose for each blank a suitable word from the above table. First, I haven't got anything to read. Anything, this word we used here of the pronoun. Okay. In this way you should write all the fill in the blanks in your textbook. Now let us see the last question. Question number 5. Make the following sentences A negative and B interrogative. यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बना के दिया है, उस तरह से आपको बाकी सारे सेंटेंस को भी सॉल्व करना है. सो लेट अस सी द फर्स्ट. ही नोज समथिंग. He knows something. This is your question and you should make the negative sentence as well as interrogative by using pronouns. First A. He does not know anything. Here we can use anything pronoun to make a negative sentence. And to make it in interrogative, does he know anything? In this way you should make an interrogative sentence by using these pronouns. In this way you should write or you should solve these all examples at your homework. So hopes you understand today's lesson. I know this is big but this is very simple. Here you have given also simply the pronouns which we had learned today. Hopes you understand and thank you.